Hello children, this video is specially made for you. First of all, tell me, are you good at asking questions? If no, this video is for you. So basically there are two types of questions, the ones which can be answered in yes or no, and the other one that start with WH words. So let's have a look at the questions which can be answered in yes or no. So which questions can be answered in yes or no? The ones that start with a helping verb. Some examples. Do you have any money in your account? Was Sana present yesterday? Are you going to take your exams this year? So kids, here you can see that the questions which can be answered in yes or no will always be on this pattern. Then there's a second type of questions which start with WH words. Now, this type of questions are known as WH family questions. Now, what are WH words? WH words may include what, when, where, who, whom, and how or how long. Now here you might be thinking that how is a word that does not start with WH word, but let me tell you that it's a word which should be categorized with WH words and it always comes under WH family question words. So let's begin with the structure of WH family questions. So what does the structure of a WH question look like? First of all, WH word will come, then comes helping verb, then subject, then main verb, then object or adverb phrase if it is ever present in the question, so it will come at the end. Let's have a look at the example. Why are they playing inside? So in this question, why is WH word, are is helping verb, they is subject, playing is main verb and then inside is adverb. तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके माइंड में what से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे आप किस तरह पूछ सकते हैं. जैसा कि तुम किस चीज़ की तरफ देख रहे हो. What are you looking at? कैसे पूछेंगे? What are you looking at? What did you do yesterday? कल तुमने क्या किया? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिंपल पास्ट टेंस का है. सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है, जैसा कि यहाँ पर व्हाट यूज़ हुआ, उसके बाद डिड यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन अगर कोई वर्ब यूज़ होना हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जैसा कि यहाँ पर डू इस्तेमाल हुआ. कल तुमने क्या किया? What did you do yesterday? नेक्स्ट क्वेश्चन भी व्हाट से रिलेटेड है. तुम अपने दोस्त की सालगिरह पर क्या पहन रहे हो? Who is another question word. Who means कौन. अगर आपने who का सेंटेंस बनाना है तो who भी सेंटेंस के शुरू में आएगा. Such as who owns this house. इस घर का मालिक कौन है? Who owns this house. यहाँ पर आपने माइंड में रखना है कि हु वाले क्वेश्चंस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा. क्वेश्चन वर्ड मीन्स हु के फ़ौरन बाद मेन वर्ब यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, हु ओन्स दिस हाउस. इन पास्ट टेंस, हु वेंट आउटसाइड. हु इज़ द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू सारा. हु इज़ द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू सारा. सारा के साथ जो लड़की बैठी है वो कौन है? सारा के साथ जो लड़की बैठी है वो कौन है? Who brought these sweets? ये मिठाई कौन लाया? Who brought these sweets? Where is another question word? Now let's see how we can ask questions by using where. Where are my spectacles? I'm looking for them everywhere. मेरा चश्मा कहाँ है? मैं हर जगह इसे ढूंढ रहा हूँ. Where are my spectacles? I'm looking for them everywhere.
जब किसी तकरीब या फंक्शन के बारे में क्वेश्चन करना हो कि वो फंक्शन कहाँ हो रहा है या वो सेरेमनी तकरीब कहाँ हो रही है, तो हमने क्वेश्चन कैसे पूछना होगा? वेयर इज़ द सेरेमनी टेकिंग प्लेस? Where is the ceremony taking place? Next question word is when. How can you ask question by using when? When are your parents coming back from Saudi Arabia? तुम्हारे वालिदैन सऊदी अरब से कब वापस आ रहे हैं? When are your parents coming back from Saudi Arabia? अगर फ्यूचर टेंस में when का इस्तेमाल करना हो तो will when के बाद इस्तेमाल होगा. When will you finish this project? When will you finish this project? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ, जो कि WH फैमिली में कैटेगराइज होता है. और हाउ के साथ आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? हाउ के बाद आप डिड यूज़ करेंगे अगर सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है. हाउ, डिड, सब्जेक्ट एंड देन कम्स मेन वर्ब, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हाउ डिड शी रीच हर होम? वो घर कैसे पहुंची? हाउ डिड शी रीच हर होम? अगर आपने किसी से ये क्वेश्चन पूछना है कि तुमने ये काम कैसे किया, तो इसको आप कैसे पूछेंगे? हाउ डिड यू मेक दिस यमी बिरयानी? तुमने ये मज़ेदार बिरयानी कैसे बनाई? हाउ डिड यू मेक दिस यमी बिरयानी? अगर किसी से आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि तुम इसकी पेमेंट किस शक्ल में चाहते हो या तुम इसका मुआवजा किस शक्ल में लेना चाहते हो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा. हाउ डू यू वांट टू गेट पेड? How do you want to get paid? Next question word is whom, and whom is often used with to. To whom this book belongs. ये किताब किसकी है? To whom this book belongs. तो सेंटेंस में अगर किसकी इस्तेमाल हो रहा हो तो आप to whom का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. To whom are you writing this letter? तुम ये ख़त किसे लिख रहे हो? To whom are you writing this letter? Which is another question word and it means कौन सा. Which one? There are two dresses. Which one do you like? There are two dresses. Which one do you like? अगर आपकी मदर मार्केट से 2 ड्रेसेस लाती हैं तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं. Which one do you like? Another example of which is which way leads to Rome? कौन सा रास्ता रोम की तरफ जाता है? Which way leads to Rome? I hope you have liked this informative video on WH questions. If it is like that, so you can like this video and share it with your friends. Thanks for watching. Take care.